Good evening, everybody. Okay, we'll start with the last part of the topic. There is histogram pending. There is frequency polygon yet pending, but we cannot do it because we will need graph paper for that. We'll do it once we. Yes, Khushi Vora, I'll pick you up. Don't worry. We'll start it when the class starts. There is a pie diagram reading based on questions that we need to answer. So the lecture would be a short lecture today. There are parts of median to be discussed, which can be done only in the classroom. So your respective teacher would do that. So I'll start discussing the homework first. Okay. At the end, we can see some pie diagrams who have made pie diagrams. We can see their pie diagrams, if the pie diagrams are good enough. Okay. Okay, great. Now, first we'll start discussing the homework. Anybody as discussed, Khushi Vora, she messaged me many times. Khushi Vora from Ghatkopar. Hi, Khushi. Hello, sir. Good evening. Good evening. So you've done your homework? Yes, sir. Copied from where? Nowhere. Nowhere? Okay. You can see the first question on the screen, right? Yes, sir. Okay. First, we have to find out the central angle. Central that is angle. theta. What is the formula for Yes. theta? What is the formula for theta? Central angle. The means the area upon total into 360 degree. एरिया किसका? सर्कल का, पैरेललोग्राम का, ट्रायंगल का, किसका एरिया? खुशी? No, the Data. The numerical value of a particular sector is called as data. The total of all the data is called as total. तो okay. तो one by one खुशी मेरे को सबका central angle बताना है, ठीक है? Yes. First वाले का क्या आएगा? 160 degree. Okay. Second वाले का? 120 degree. क्या बात है, वेरी नाइस. थर्ड वाले का? 40 degree. सच्ची बोलो. Yes. हाँ ठीक है. 30 बोला ना तुमने? नहीं 40. हाँ ठीक है. नेक्स्ट वाले का 2000 वाले का? 40. वापस 40? ऐसा कैसा? The total will be 500, right? No, 360 degree. 360, perfect. Have you drawn a circle? Yes, sir. Ideal scale would be 5 centimeter. 5 centimeter. Then we will mark 160 degree. It's an obtuse angle, तो 90 के बाद आना चाहिए. I believe everybody has done this. Naming किया खुशी. I will see your diagram at the end. You'll have to put your camera on, video on, and you have to show me the diagram. Okay? Okay, sir. Okay, I'll check that. I'll randomly pick up people. I want to check your homework. You have to put on your video and you have to show me your homework. From my next lecture, I will start doing that at the beginning. First, I will check homeworks like that. I'll randomly ask anybody to show your homework. So, Khushi, we'll go with the next sum, okay? Yes, sir. Khushi, for the first one, central angle would be? 108 degree. 108 degree, perfect. Now see, now you have to be very smart students. अभी तुम लोग देखेगा यहाँ पे जो डेटा दिया है वो परसेंटेज में, राइट? तो उसका टोटल 100 ही आना चाहिए हमेशा. तो डेटा अपॉन टोटल 40 अपॉन 100 इंटू 360 क्या है आंसर? 144 degree. 144 डिग्री. नेक्स्ट वाले का? 72 degree. 72 डिग्री. नेक्स्ट वाले का? 36 degrees. 36 degree. Now see, if you people are smart enough, you can do that. I can see everything is a multiple of 10. तो अगर मैं तुम्हारे जगह पे रहूं ना, मैं पहले 10 का ढूंढूंगा. तो 36 मिल गया. 10 2s are 20, तो 36 2s are 70. 10 4s are 40, तो 36 4s are 144. 10 3s are 30, तो 36 3s are 108. I have to show the substitution. Cancellation दिखाने का जरूरत नहीं है, लेकिन I believe ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा. Now remember students, if you are talking about the same paper pattern being followed, we will have at least 11 marks paper which will be going to be outside the paper, outside the textbook. So we will need to manage our time very nicely. So I advise the textual sums should be so thoroughly done कि non-textual sums के लिए हमको वो 2-3 sum के लिए to do 2 sums or 3 sums we need at least an hour. Out of 2 hours we need 1 hour for doing 3 sums. So remember that. So textual sum में जितना time बचा सकते हैं बताओ, बचा देने का. तो I believe सब लोग ने ये pie diagram भी बना दिया रहेगा. I'll be checking that randomly. Starting with Khushi. Khushi, next one. Next one, Khushi. Yes, the first one is 36 degree. Perfect.
Second one 72 degree. Okay, Third one 126 degrees. perfect. Then 108 degree. क्या बात है? And then 18 degree. 80 डिग्री टोटल 500 आ गया. नहीं 360. अरे बट टोटल सेम आता है क्या? वैरायटी. Okay, Khushi, thank you so much. I believe everybody has drawn the pie diagram as well. Khushi, I'll put you on mute, okay? Okay, students. Now we will go to another. There was one more sum, right? Okay, I missed it. I forgot about it. I will give you the answer. पहले वाला is 100 degree, then 120 degree, then 65 degree, then 45 degree, and then 300 degree. अगर mistake हुआ है calculation में तो please be careful. And then we draw the pie diagram as well. Be very careful. Okay, now I want everybody, if not written down these formulas, write down these formulas once again, because all these three formulas will be required if we are solving pie diagram reading. Now pie diagram reading का sums can be challenging at times. अभी कुछ बातें मैं बोलूंगा, जो भी डिग्री में होगा ना, डिग्री में वो थीटा होता है. अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, that is data. Now data unit can be anything. It can be in percentage, it can be in rupees, it can be anything. एक पर्टिकुलर सेक्टर का दो टाइप का डेटा हो सकता है, एक परसेंटेज में और एक नॉर्मल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू. तो रिमेंबर दैट, राइट डाउन दिस फॉर्मूला. थीटा इज इक्वल टू डेटा अपॉन टोटल इनटू 360. डेटा इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू टोटल. Total is equal to 360 upon theta into data. Now these three formula will be used in different sums. So remember, I want you to make a note of it. Everybody type if it is done. याद हो गया? सब लोग ने लिख लिया? Type yes if done. याद हो गया formula सबको? Type yes. Perfect Ayush, perfect Raj, perfect. Yes Tanishka, great. Now we'll go ahead. Now sums are easy. अगर पाई डायग्राम ड्राइंग और रीडिंग में मुझे ऑप्शन दिया ना, मैं हमेशा पाई डायग्राम रीडिंग करूंगा. जिसको पाई डायग्राम रीडिंग समझ गया वो पाई डायग्राम रीडिंग हमेशा करेगा. जिसको पाई डायग्राम रीडिंग नहीं समझा, यू कुड बी इन ट्रबल, बिकॉज दिस इज वेरी इजी और ये 3-4 मार्क का सम है बन सके. ओके, नाउ आई एम रीडिंग द सम फॉर यू. दिस इज द टेक्सचुअल सम. इन पाई डायग्राम, द पाई डायग्राम इन फिगर 6.13 of your textbook shows the proportions of different workers in a town. Answer the following questions. There are 3 different sub questions here. I'm taking the first sub question. If the total workers is 10,000, how many of them are in the field of construction? Is the screen hanged? I'm getting messages that screen is hanged. Is the screen hanged, or you can see the screen? Steiner says screen is hanged. Everybody else, can you see the screen? Type yes. You can see the screen? Yes. Everybody can see the screen. Steiner, I want you to check your internet connection. Okay, I will need somebody for answering my few questions so that I can help. No, there is no movement done right now, so it is stuck. Okay, Preet Parmar, I'm picking you up. This is lot of days I've been keeping you on hold. Hi, Preet. Yes, sir. Preet, first question. Okay. Hello, Preet. प्रीत आवाज नहीं आ रहा. Hello. हाँ प्रीत, आवाज नहीं आ रहा. हेलो प्रीत, आई कांट हियर यू. Preet. Okay, I'll have to pick somebody else. Preet. Okay, he muted himself. Hi Preet, you can hear me? Yes, sir. Okay, great. First of all, can you see my screen? I can't hear you once again. आवाज कम हो गया. Preet. Hello. Preet, I will pick up somebody else because there is some problem with your voice. It's coming and going. Okay, there is somebody from Saidham. I'm finding it difficult to pronounce her name. Honbri from Saidham. Hi Honbri. Correct me if I'm wrong. Correct me if I'm wrong. Yes, correct. I'm correct. I am smart. I've grown smart. Okay. First of all, can you see my screen? I'm Yes, getting sir. few messages that my screen is hanged or something. It is not that, right?
No, sir, I can see your screen. Okay, perfect. Now tell me, there are three things. There are, see, now try to understand. Now I'm going to take help of Hornby to understand the sum. In the entire pie diagram, we have understood a formula, theta is equal to data upon total into 360. तो पूरा पाई डायग्राम में ना या तो थीटा है या तो डेटा है या तो टोटल है, यही तीन अननोन, यही तीन वैल्यूज है, राइट? राइट हॉर्नबी? Yes, sir. थीटा डेटा टोटल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर उन लोग क्वेश्चंस में कुछ पूछेगा, इफ दे आर ट्राइंग टू आस्क समथिंग, दे कैन नॉट आस्क एनीथिंग अदर देन थीटा डेटा एंड टोटल. और कुछ वैल्यूज दिया रहेगा ना, तो दे कैन नॉट गिव एनीथिंग अदर देन थीटा डेटा एंड टोटल. तो कभी कभी समझ में नहीं आएगा पूछा क्या है, तो फाइंड आउट करने का दिया क्या है, तो जो मिसिंग है वो पूछा है, करेक्ट? तो हॉर्नबी विल टेल अस कि ये सम में पूछा क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, हाउ मेनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन? क्या पूछा है? थीटा पूछा है, डेटा पूछा है, टोटल पूछा है? Data पूछा है. कल सा समझ में आया तुमको डेटा, मेरे को तो समझा ही नहीं. के लिए टोटल वर्कर्स दिया है, हम लोगों को कितने फील्ड में है बोलना है, इसीलिए. इन टोटल वर्कर्स दिया है तो थीटा भी तो पूछा हो सकता है. थीटा दिया है ना सर? हाँ, डायग्राम में थीटा दिया है ना, तो थीटा दिया है, टोटल दिया है. फॉर ऑल दोस हु now Hanbri is smart. Now not all of you are smart like Hanbri. Some of you are like me. You won't understand कि डेटा पूछा है डायरेक्टली, क्योंकि देखो अगर कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पूछा है तो डेटा ही पूछा होगा. टोटल दिया है, थीटा दिया है, तो डेफिनेटली हमको डेटा पूछा है, करेक्ट? तो देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड. देयर आर मेनी मेथड्स टू सॉल्व दिस सम, बट आवर बोर्ड विल गिव यू मार्क्स ओनली व्हेन यू फॉलो दिस मेथड. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द हेडिंग कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना दिया हॉर्नबी? 10,000. 10,000. कंस्ट्रक्शन का सेंट्रल एंगल कितना है थीटा? 72. 72 डिग्री. तो नंबर ऑफ वर्कर्स जो डेटा है उसको मैंने x ले लिया, ठीक है? नाउ अपना फॉर्मूला क्या है? थीटा इज इक्वल टू डेटा अपॉन टोटल इनटू 360, राइट? यस सर. अपन डेटा का भी फॉर्मूला लिख सकता है, बट अवॉइड दैट फॉर्मूला. ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली. अभी मुझे बताओ, वी कैन नॉट एवर राइट दिस फॉर्मूला इन योर सम. डोंट राइट दिस फॉर्मूला इन योर सम. तुमको यही फॉर्मूला को अपने सम के हिसाब से लिखना है. अभी थीटा इज इक्वल टू ना, थीटा मतलब क्या हो गया? सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऐसा लिखने का, इज इक्वल टू. डेटा मतलब क्या आएगा हॉर्नबी? Workers in the field of construction. वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल इनटू 360 है, तो अपॉन टोटल क्या हो जाएगा? Number of workers. Total number of workers. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या? थीटा इज इक्वल टू डेटा अपॉन टोटल इनटू 360? नहीं, ये हम लोग ने बनाया ताकि हम लोग याद रख पाए. तो थीटा मतलब सेंट्रल एंगल, तो लिखना पड़ेगा. हम लोग किसका बात कर रहे हैं? सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू डेटा मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंस्ट्रक्शन अपॉन टोटल मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 360. नाउ यू विल हेल्प मी सब्स्टिट्यूट. सेंट्रल एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है? 72 डिग्री. तो हम लोग ने लिखा है, देखो तुम लोग को ब्लिंक हो रहा है, तारे जैसा ब्लिंक हो रहा है ना, स्टाइल दिख रहा है, ब्लिंक हो रहा है स्क्रीन पे हॉर्नबी? हाँ सर. ओके, तो 72 डिग्री. नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है? नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं दिया है सर. तो हम लोग ने X. लिया ना कुछ x. देखो वापस दोनों ब्लिंक हो रहा है, तो इट वुड बी x. इट वुड बी x. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हॉर्नबी? 10,000. वो हमको वापस ब्लिंक हो रहा है, देखो दिया हुआ है, हाईलाइटेड इनटू 360. अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है हॉर्नबी, टुगेदर. सबसे पहले ये 10,000 इस साइड है, इस साइड गया तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लिकेशन. और 360 का क्या हो जाएगा? 360 का डिवीजन. डिवीजन, परफेक्ट. इज इक्वल टू x. कैंसिलेशन करते हैं, 0 0 कैंसिल. 36 का सर टेबल एक आता है जीरो तुमको? कम है वहाँ पे. एक जीरो कम लिया मैंने. ओह माय गॉड, तुम लोग एज्यूम करो तुमको दिख रहा है, ठीक है? वो दिख रहा नहीं है लेकिन है. 0 0 कैंसिल. 36 1 जा 36, 2 जा 2 into 100. 36 का. 2000 आना चाहिए. कितना आना चाहिए? हाँ 2000. Give me a second, I will just change so that nobody makes mistake. Okay students, I want you to finish the sum. I want everybody, Hornby, I want you to finish, everybody to finish the sum. Thank you so much, Hornby. I want You're everybody to welcome finish. sir. Once done, please मुझे बताओ. Okay, यहाँ तक कॉपी कर लो. Once done मुझे बताओ.
Okay, everybody is done. Please type your messages in the message. Let me know if it is done. Write done if it is done, done. So I can move ahead. Write the final answer for this. It's very simple, right? It's very easy to solve this. I believe one of the easiest type of sums. Once this is done, I want everybody to do the second sub question. Everybody done? I am not getting messages for some reason. Okay. Okay, students, I'm not able to read the messages for some reason. I'm getting it. Okay, somebody saying no. The answer is 2000. Yes, the answer is 2000. Thanks to Hornbury, she was very careful and attentive. She made me realize I've made the necessary changes. The same mistake was there in the next sum, so I quickly did the amendments. Thank you, Hornbury, for that. Okay, great. Now the next question is on your screen. I want everybody to solve this. I will give the initial few things. Total number of workers is given 10,000. Central angle is given to us as 36 degree. If you see. Okay. Let the number of workers be n. Now, please solve this quickly. I'm giving you 5 minutes to solve this. Quick. 5 minutes थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे कम टाइम. Quickly, everybody. Anybody who wants to answer, please raise your hand or type in the message. Completed the no. What do you mean by no? Okay. Anybody who wishes to speak the answer or steps? Yash Pawar from Vikhroli. Hi Yash. Hi, sir. Good afternoon. Good evening rather. Good evening, sir. How are you? Fine. समझ में आ रहा पाई डायग्राम रीडिंग? Easy एकदम? Perfect. Okay, we'll go ahead. Central angle of administration कितना substitute करूँ? M. हाँ? M. 1. Hello. Now you are behaving like Leher now. She was behind proving me that I am deaf. Yes, you can hear me. Yes. Please tell me central angle of administration के जगह पे क्या लिखूं? Theta. हाँ? Yes, I can't hear you. I'm putting you on mute. I will pick up somebody else who want to answer. Okay, we'll pick up Clyde. Hi, Clyde. Hi, sir. Good evening. How are you? Fine. You're understanding the sum, right? Yes, sir. Yeah, perfect. So help me in doing this sum, okay? Clyde, what will be the central angle? 36 degree. So students, it is given in the previous step, 36 degree. So I am trying to click. It is blinking for you. So it is 36. Number of workers in administration? Assume it as X. Assumed it as X. Now, Clyde, I would like to correct you one thing. I have assumed it for this as M. Why I will tell you? Because it's a part of the same question, right? तो एक बार X ले लिया तो उसके बाद same variable avoid करना, ठीक है? Okay, sir. Okay, M upon total number of workers? 10,000. 10,000 into 360. अभी क्या करूं मेरे को बताओ? 10,000 should be shifted on the left side and which will multiply by 36 and 360 will go upon it. क्या बात है? Is equal to M and then 0 cancel and then 36 ones are 36 ones are. M is equal to 1,000. 1000. Now see, थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं एक और चीज कि 1000 राइट आंसर है. प्रीवियस कंस्ट्रक्शन में 72 डिग्री था, राइट? तो ये उसका हाफ है, तो उसका आंसर हाफ आना चाहिए. प्रीवियस आंसर 2000 आया तो यहाँ पे आंसर 1000 आना चाहिए. थैंक यू सो मच क्लाइड. इफ यू कैन पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट. Okay, he's already done that. He's a smart fellow. Okay, now the next one is tricky. Who does it fast, we'll see. Okay, so the next one
What percentage of workers are there in production? Let us see who does it very quickly, and you have to explain me how. Okay. Once you're done, write your answer first and then I will pick you up. And you have to tell me how you have done it. पहले हम लोग को number of workers ढूंढना पड़ेगा क्या, फिर उसका percentage निकालेंगे कि कोई और तरीका है कि यही एक तरीका है. Let us be okay. I'm waiting, Gaurav. Don't worry. I'm waiting. I'll wait for 2 minutes. Only then I will consider to pick up. Till then, I'm not picking up anybody. I'm waiting for 2 minutes. Only people who answer after 2 minutes, I'll pick up. Okay. There are many people who are giving me right answer. Om, we have to find the percentage also. Om. Or Om, we have to find out percentage. तुम लोग नंबर ऑफ वर्कर्स ढूंढ के परसेंटेज निकाल सकता है, बट एनीबडी हैज अ स्मार्टर वे. राज सेज 90%. तुम खुद सोचो राज, 90% अगर प्रोडक्शन है तो बाकी सब 10% है क्या? Okay, I'm not reading out the right answers. Okay. Okay. Yes, it's okay. You don't have to be sorry. We all go wrong sometimes. Simple sa calculation issue hai. I just wanted to correct you. You don't have to be sorry. You can guess, but marks nahi milega. There is somebody asking me, sir, can we guess? Directly matlab Hitesh, I want to know how directly. अच्छा ठीक है. Anybody who is ready to discuss the sum with me? Anybody who want to speak the sum with me? Okay. People are writing the answer, but can anybody discuss it with me? Clyde, I just spoke to you. I want somebody to explain the answer to me. Vedant, your answer is wrong, beta. Okay. Who will speak? Everybody's telling me the answer. Nobody's ready to speak, or I should go ahead explaining it myself, or anybody's ready to explain. Preet, I can't listen to you. There is some problem with your voice. Mic issue, yes. So why you want to speak now? How would you speak? Anybody? Okay. I think I will go ahead since nobody is ready to speak. Okay, I've got somebody from Ghatkopar. Clyde, I'm not picking you up because you just spoke. Okay. Soumya from Ville Parle. Hi, Soumya. Hello, Soumya. Hello, Soumya. Okay. She's not speaking. She told she wants to answer, but she's not speaking. So we will put her aside. Okay. Hanbri, you just answered. So I have no option but to get humiliated by Leher. Hi, Leher. Hello, Good evening sir. again. Good evening. Yes, tell me what would be the how did you calculate rather? So first one was a logic that 90 degrees, then it's 25% only. Acha, so you will write in the examination. It is No, logic. sir. So if you don't understand, don't give me marks. Tell me how I have to write. Logic तो बहुत सारा है. Direct variation से ऐसा हर sum किया जा सकता है direct variation से. First find out the number of workers. Okay. Then we have to carry out the percentage Leher, number. is it necessary to find out number of workers? I'm telling you, even without finding out the number of workers, we can do. Okay. Even before you tell me that I don't have logic, I will tell you. Okay. Okay. See, अपने पास central angle है 90 degree. हाँ. और central angle का total 360 है, मालूम है ना? हाँ. तो इससे भी तो percentage निकाला जा सकता है. हाँ. समझ में आ रहा है? You can find the total number of workers. We cannot use logic, right? We cannot say कि logically it is this much. No.
तो examiner will write logically you get 0 marks. So there are two ways. One, what Leher told us is find out the total number of workers and then find out the central percentage. But here we have, see, we have one more criteria here, that is central angle, और सबका total पता है. तो percentage of workers का percentage का logic value मेरे को मालूम है, percentage का formula value upon total value into 100. तो 90 upon 360 into 100, 0 cancel. 9 1s are 9 4s are 4 1s are 4 25 are percentage. लहर तुमने कैसा find out किया आंसर? सेंट्रल पहले अपना ये नंबर ऑफ वर्कर्स निकाला फिर परसेंटेज. Okay. So I think this is a better way. I want everybody to copy this down quickly. Copy down this quickly. I'm giving you 2 minutes and then we'll go for next sums. This is one of the trickiest sum. I believe it's easy. Pi diagram reading is easy, right? Please write messages if it's easy, write easy. If it's difficult, write difficult. But I believe it's the most scoring one, where you can't lose marks easily. Okay, quickly in 2 minutes, I'll be changing the slides. I think this is one of the easiest way to find out percentage. अगर central angle, याद रखो students, percentage पूछा है ना, और central angle है मेरे पास, तो percentage निकालने के लिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे. This becomes very easy. Okay, I believe most of you are done. So we'll go with the next sum. Okay, students. Okay. Sir, easy to find number of workers then percentage. Yes, Aditya, it's completely okay. Nobody can give you wrong. It's right. Final statement is wrong. It is production. Yeah, there might be mistake. Okay, students. Now we are going for another sum. Question number 14 of your problem set. Observe the adjacent pie diagram. It shows the percentage of number of workers of vehicles in a signal in a town between 8 AM and 10 AM. ठीक है, तो बहुत लोग सिग्नल में घूमता रहेगा, तो परसेंटेज में दिया हुआ है. कैन एनीबडी टेल मी क्या क्या दिया हुआ है अपने पास? एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक? Anybody who wants to discuss with me, and then I will give you some time to complete the sum. Okay, I'll pick up Raj from Vikroli. Hi Raj. Hi sir. Hi. Good evening. How are you? Fine sir. Fine. Okay Raj, we know कोई भी एक पाई डायग्राम के सम में या तो थीटा होता है, या तो डेटा होता है, या तो टोटल होता है. इसमें क्या क्या दिया है तुम बता सकते हो? Theta is given. Theta is given. And also data. No. Total is given. Total is given. Total कहाँ दिया है? So, theta. क्या अगर theta is given ना? Raj. Yes. I just want you to read the question. First of question क्या है? Find the central angle for each type of vehicle. अच्छा, उन लोग ने सेंट्रल एंगल पूछा है, मतलब थीटा पूछा है. Yes sir. तो थीटा दे सकते हैं क्या? No. ना. Carefully देखो. Thank you so much Raj. You did this mistake. I'm glad that you did, because 95% students do this. सेंट्रल एंगल में जो लिखा है वो जरूरी नहीं है डेटा है. ध्यान से देखो उधर बाजू में क्या लिखा है? 30%, 40%, 12%. Right Raj? Yes. So this is data in percentage. मैंने बोला ना, डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है. डेटा दो तीन टाइप में हो सकता है. तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल दिया हुआ नहीं है, तो सेंट्रल एंगल. तो मेरे को बताओ राज, सेंट्रल एंगल सिर्फ टू व्हीलर्स कार्स का पूछा है कि सबका पूछा है? All vehicle. Each type of vehicle. अभी सबके लिए, अभी मेरे को पहली बात तो सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एंगल थीटा का फॉर्मूला अगर तुमने लिखा है तो देख के भी बोलो चलेगा. थीटा इज इक्वल टू डेटा अपॉन 360 इनटू टोटल. डेटा अपॉन टोटल इनटू 360. यस. डेटा अपॉन टोटल इनटू 360. अभी जब स्टूडेंट्स अभी ध्यान से सुनो, जब हर एक का पूछा रहेगा ना, बार बार फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली मेक द टेबल. Simply make the table
like you make in pie diagram drawing. So I'm giving you 2 minutes. I want everybody to draw the table. So Raj, even you draw the table and then you are going to tell me the answer. Okay, Raj? I'm waiting for Yes, you. sir. Okay, quickly. Everybody. The total will be 100 definitely because हर एक data हमको percentage में दिया हुआ है. I'm continuing with Raj. Raj will be unmuted again and he will give me the answer. I'm doubtful whether you can cross multiply and find the answer because you will have to show the substitution in the table. Okay. Raj, once you're done with the calculation, please type done. Then I will unmute you. We'll wait for 1 more minute and then we'll discuss the answer. Right, start substitution. 10 upon 100 into 360. Similarly, 40 upon 100 into 360. 30 upon 100 into 360. 12 upon 100 into 360. 8 upon 100 into 360. Okay. Jitendra has some doubts. I will just put him on unmute. Hi, Jitendra. हेलो सर. हाँ बोलो, क्या नहीं समझा जितेंद्र? सर वो पिछले वाले सम पे नहीं समझा था. अरे यार, पिछले वाले सम स्क्रीन इज पॉज बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. पिछले वाले सम का डाउट अभी तुमको पूछना है. ठीक है, तो एक काम नहीं पहले भी पूछा था, आपने देखा नहीं वो चैट वाला. कैसा होता है ना, मैसेजेस बहुत आते हैं तो ना मैं काफी बार मैं कुछ देखूं उससे पहले वो स्क्रॉल अप हो जाता है, तो मैं कुछ पढ़ पाता हूँ, कुछ नहीं पढ़ पाता. सॉरी जितेंद्र. क्या करेंगे हम लोग, वीडियो देखेंगे जितेंद्र, नहीं तो तुम मुझे पर्सनली कॉल करो. मैं तुम्हारे पास मेरा नंबर तो होगा ही, ठीक है? हाँ है ना. हाँ, तो मुझे कॉल कर देना पर्सनली, मैं तुमको पर्सनली डील थैंक यू सर. Okay. Raj is done. So I was waiting for Raj to finish the sum. Hi Raj. Hi sir. Yeah, please help me with the answer. The answer for the first one? 36 degree. 36 degree. Obviously 10%. 30. Answer for the second one? 144 degree. 144 degree. Answer for the third one? 108 degree. 108 degree. Answer for the fourth one? Tempos? It's 43 degree. 43.2, right? Yes. Okay. Next one? 180 degree. 180 degree. 180? It has to be 28.8. No, 28.8. Sorry. Correct, 180 नहीं हो सकता. 180 990 जब होगा जब उसका 90 डिग्री होगा, या फिर वो आधा से आधा होगा, 50% होगा तो 180 हो जाएगा. Okay, that's great. Thank you so much, Raj. Now there is one more sub question quickly and then we will start discussing. Answer can come in decimal, Tanishka, because it is possible for me to answer can, if I have to plot this. मुझे किसी ने प्लॉट करने बोला नहीं है. अगर प्लॉट करने बोला होता तो मैं हर एक को राउंड ऑफ करता, तो मैं टेम्पोस को 43 लिखता था, बसेस को 29 लिख देता था. ठीक है, बसेस को 43 लिख देता था और बसेस को 29 लिख देता था. टेम्पोस को 43 लिखता था और बसेस को 29 लिख देता था. इफ आई हैड टू ड्रॉ दिस, ड्रॉ करना नहीं है, सिर्फ आंसर करना है, तो आई विल राइट दिस एंड डू नॉट टेक इट अप्रोक्सीमेटली बिकॉज द डिविजन इज एंडिंग. ओके, वन मोर सम. अभी है ना, यहाँ पे मुझे टोटल दिया है, मेरे पास थीटा है, थीटा मेरे पास प्रीवियस सम से है, तो हर एक का डेटा पूछा है.
तो हर एक का डेटा ढूंढना है. थीटा मेरे को मैंने प्रीवियस सम से लिख लिया 36, 144, 108, 43.8, 43.2 एंड 28.8. Now why did I not round off is, अगर मैंने राउंड ऑफ किया तो नंबर ऑफ व्हीकल्स गलत आएगा. मैंने राउंड ऑफ नहीं किया क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स मुझे सही चाहिए. अमोघ, इफ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन. ओके, नाउ सबको डेटा ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि थीटा दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 1200, तो डेटा ढूंढना है. तो डेटा का फॉर्मूला आ जाएगा, वी ऑल नो थीटा अपॉन 360 इनटू टोटल. I want you all to quickly substitute and find out the answer. Quickly substitute and find out the answer. Quick. I'm giving you 2 minutes time to substitute and find out the answer. Quickly. We are running short of time. We do not have to show the working for this sum. No, we just have to draw the table and the calculation. जो substitution दिखाते हैं ना हम लोग 36 upon 360 into 1200, यही दिखाना पड़ेगा बस. बाकी कोई वर्किंग दिखाना नहीं पड़ेगा. तो इट इज अलाउड बाय बोर्ड्स, जब हर एक का उन लोग डेटा या टोटल पूछते हैं तो वी कैन ड्रॉ द टेबल. इट्स अलाउड इन पाई डायग्राम. रीडिंग. quickly do it. नेक्स्ट वाले का 144 upon 360 into 1200. अमोघ, हियर होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अगर डेसिमल में लिया तो शायद नंबर ऑफ व्हीकल्स अलग आ जाएगा. कैलकुलेशन थोड़ा टीडीएस हो सकता है. बी स्मार्ट. Yes, 200 is the total number of vehicles, Shreya. Great. Anybody who's done so that we can discuss the answer? I think understanding is very simple. इसमें समझना बहुत easy है. खाली calculation को time लग जाएगा. Students, the total number of vehicles is not 1200. Two-wheelers is not 200. Total number of vehicles is not 1200. The number of two-wheelers is 1200. First, we will have to find out the total number of vehicles here. Now, students, what we'll do is we are running out of time and there is some mistake in the slide. So what I will do is I'll give this sum as homework and we'll discuss this sum, this particular sum in our next lecture. We'll discuss this sum in our next lecture. So I will end my lecture here. There is some calculation error in my PPT. I will do that and you can do it as homework and we'll discuss this sum next time. So with this, we also end pi diagram reading ka sums. I misread the sum. So we'll meet sometime. No, not only one sum. There will be few more sums coming in the homework. There are few more sums coming in the homework. Last sum will be homework. I will be discussing it in the next lecture. Now once again, last sum में जो था, the number of two-wheelers is 1200. Total numbers are not 1200. तो उससे पहले मेरे को total ढूंढना पड़ेगा, theta use करके, and then find out the number of vehicles. Okay, students. Okay, Dhruv sir. Thank you so much, everybody. Yes, sir. Yeah. Okay. I'm done with the sum. Next time we will be starting with the new chapter. All right, sir. A little announcement to make. A lot of people have already left the meeting, I think. Yeah. So the people who are still in the meeting, I request all of you to have your geometry box ready. That's what is Pritesh sir's message for his physics lecture. He wants everyone to be prepared and be ready with the geometry boxes. That's it.